Hello, good morning, student. Hope you all are well at your home. Okay, एंड आप लोगों की पढ़ाइयाँ भी अच्छे से लॉकडाउन में चल रही होगी, ठीक है। तो दिस इज द स्पेशल लॉकडाउन सीरीज। ओके, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग द पर्सन दोज आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज वॉच अवर previous video based on the quadratic equation. You can go through our channel physics maths and physics tutorial and check the playlist. Okay, yeah, you can search the quadratic equation physics maths and physics tutorial, then you will get the all the video based on the quadratic equation. So today we are starting the new concept based on the quadratic equation. और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख भी लिया होगा, the topic of the today is discriminant. Okay, तो discriminant, तो what is the discriminant? ओके, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, and when we write the formula of the solving the quadratic equation, the formula is minus b plus minus root b square minus 4ac and whole upon 2a. So this is the formula to find the root of any equation by the help of formula. Okay, तो अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो कोई भी इक्वेशन आपके पास गिवन है, if you have given any equation and your question is, if anybody asks you the one question, what will be the nature of the root? Nature of the root means the value of the x, the two possible value are x based in the quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो पॉसिबल वैल्यू है, एंड विच टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द वैल्यू मींस पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू या इमेजिनरी नंबर या किस टाइप का नंबर होगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या हाउ कैन वी टेल द आंसर विदाउट सॉल्विंग द होल इक्वेशन. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचर ऑफ द रूट. किसी भी रूट के बीच के नेचर जो होंगे या कोई भी जो रूट होंगे उनमें हम लोग डिफरेंस कैसे बताएंगे कि कौन ऐसा है, कौन रेशनल नंबर है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन आपका इक्वल है, कौन इक्वल है. ओके, तो b square minus 4ac, this part b square minus 4ac, this is known as discriminant. b square minus 4ac is known as discriminant, and with the help of this formula we can identify the nature of any root. किसी भी रूट का क्या कर सकते हैं, नेचर कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of b square minus 4ac. So there are the so many condition in the in this discriminant. First one is if d is equal to 0. One second equation is if d is greater than 0, and third one is if d is less than 0. So in the first case d square is equal to 0 means we can say that the value of the d square is b square minus 4ac. So b square minus 4ac is equal to 0. तो in this time when the discriminant is 0, जब हमारे पास discriminant 0 होगा तो उस केस में जो रूट होंगे, रूट क्या होंगे आपके पास, the value of the roots are real and equal. रियल एंड इक्वल मींस जो x की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी, x की जो वैल्यू मिलने वाली है, 2x की जो दो वैल्यू मिलेंगी, रियल नंबर, यू नो अबाउट द रियल नंबर भी हो सकता है, या दोनों नंबर क्या होंगे आपस में, इक्वल भी हो सकते हैं. तो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल आफ्टर दिस कांसेप्ट. सेकंड वन इज d is greater than 0. d is greater than 0 means b square minus 4ac is greater than 0. Means the value of b square minus 4ac is greater than 0. So in this time roots are real and distinct, या different, we can say that different. Third one is b square minus 4ac is less than 0, and less than 0 means roots are imaginary. इमेजिनरी मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आ गया रूट माइनस 3. तो रूट माइनस 3 कैसे लिखोगे आप, अब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, रूट माइनस 3 दिस वन वी कैन राइट
3 into minus 1, okay, then it minus 3, then minus 1, here we can write iota square, okay, this is imaginary part, so iota square, so 3 iota square, so remove the iota square from under root, then it become under root 3 into iota under root 3. So when we obtain the answer in this under root and negative, so that time we can say that root are imaginary, okay. तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक इक्वेशन मेरे पास है, इफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 2x plus 5 is equal to 0, okay, and without solving the equation find the nature या describe the nature of this equation या what will be the nature of this equation, root of the equation। क्या करेंगे, पहले एक compare this equation with ax square plus bx plus c, इससे कंपैरिजन करो। तो a is equal to, what is the a is equal to 1, b is equal to -2 and c equal to 5। तो देन ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पूरा, ठीक है, हम लोगों को सीधा डायरेक्ट निकालना डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 into a into c। तो d इज इक्वल टू 4 minus 4 1 जा 4 and 4 5 जा 20। तो d is equal to -16, d is equal to -16। so now tell me what is the value of how can we here we can comparison by with the help of three condition 1 2 3। so this d is less than greater than or equal to 0, it is less than 0 so you know that when the x are less than 0 if discriminant is less than 0 तो that time roots will be imaginary। हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि जो रूट बनेंगे हम लोगों के कैसे बनेंगे, इमेजिनरी मैंने अभी बताया था कि आयोटा के फॉर्म में आपके जो आंसर बनेंगे दैट आर द इमेजिनरी रूट, ओके। नेक्स्ट वन इज वन मोर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इज 4x square plus 4x plus 1 is equal to 0, this is the equation comparison। so then a is equal to 4, b is equal to 4 and c is equal to 1। so now discriminant b square minus 4ac, so b square means 4 square minus 4 into a, 4 into c means 1। so what is the value of d, so d is equal to 16 minus 16, so d is equal to 0, d is equal to 0 means d is equal to 0 means d is equal to 0। so in this time roots are real and equal, ओके। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास जो आंसर इसके मिलेंगे तो वो हमेशा रूट जैसे होंगे, वो कैसे होंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ध्यान रखना। और रियल मींस रियल नंबर जो आपके होते हैं, एवरी नंबर्स आर कमिंग इन द नंबर लाइन आर द रियल नंबर, ओके। जितने भी नंबर लाइन पे आते हैं वो सारे अपने आप में क्या है, रियल नंबर है, ओके। तो नाउ द वैल्यू ऑफ द रूट्स आर इक्वल। नेक्स्ट, अच्छा अगर हम इसी क्वेश्चन को 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को अगर सॉल्व करें तो देखो जरा क्या आंसर निकलता है। क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अ फैक्ट स्प्लिटिंग मेथड? अगर ट्राई करो तो देख लो, 4 1 जा 4, फाइंड द फैक्टर ऑफ द 4 in two factor of the 4 in such a way their sum या difference will be 4 and product will be 4। maybe it is not possible because it is 2 in 4 factor 4 into 1 या 2 into 2 we can write this one। तो 2 plus 2, हाँ यहाँ पे हो रहा है 2 plus 2 and 2 1 जा 2। तो this one we can write 4x square plus 2x plus 2 x plus 1 is equal to 0। तो then 2x common out, तो x plus 2 and plus x plus 2 नहीं हो रहा है, देख लो x plus 2 and 2 common out, x plus 1, हाँ x plus 1, then 1 common out, sorry 2x, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 2x common out, then 2x plus 1, okay, here 1 is common out, so then 2x plus 1 is equal to 0। so first is 2x plus 1 and second also 2x plus 1 is equal to 0। तो first time x is equal to -1/2, second time x is equal to -1/2। तो what are our answer? x is equal to -1/2 and second answer x is equal to -1/2। so now tell me these root are equal? yes, because the condition d is equal to 0, यहाँ पे d is equal to 0 आया था, it means equal।
इक्वल है. सेकेंड टाइम रियल यू नो दैट एनी नंबर्स कमिंग इन द नंबर लाइन आर द रियल नंबर. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. दोनों नेगेटिव है, दोनों इक्वल भी है. इट मींस this condition satisfy the d is equal to 0. Means with the help of the discriminant, without solving the question, we can solve, yeah, we can discuss, yeah, we can say about the nature of the root of the equation. Okay, किसी भी इक्वेशन के रूट के बारे में हम लोग सिर्फ किसकी हेल्प से बता सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. देन एक और पार्ट था, उसमें भी आप लोग वही है सेम. थर्ड कंडीशन, if d is greater than 0, so that time when the d is greater than 0, so that time roots are real and unequal. Okay, roots are real and unequal. तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके पास. 2x square plus 2x minus 3 is equal to 0. 2x square plus 2x minus 3 is equal to 0. तो in this time first of all find the discriminant. तो discriminant first comparison, तो a is equal to 2, b is equal to 2 and c is equal to minus 3. So then discriminant b square minus 4ac is equal to, so d is equal to b is 2 square, so 2 square means 4, minus 4 into a, 2 into c, minus 3. So then d is equal to 4 and minus, and this minus plus, 4 2 ja 8 and 8 3 ja 24. So d is equal to 28. So here we can say that d is greater than 0. So d is greater than 0, it means roots are real and unequal. इससे पहले इक्वल भी आया था, इक्वल टू 0 में. अब चेक करो जरा इक्वेशन को. तो द इक्वेशन इज 2x square plus 2x minus 3 is equal to 0. Okay, you can solve this equation by the two method. One is splitting method, second by using the formula. पहले splitting method पे चेक करो हो रहा है या नहीं हो रहा. तो 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि सम या डिफरेंस कितना हो 2 एंड प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए. तो क्या ऐसा नंबर कोई पॉसिबल है? There is any number possible? 6 के अगर फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 या 3 into 2 या 6 into 1. इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा. और डिफरेंस भी करें तब भी सॉल्व नहीं हो रहा. ओके, तो नाउ we can use here formula. What is the formula? X is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac and whole upon 2a. तो x is equal to minus b, तो minus b means 2, then plus minus root b square minus 4ac, we already find it, it is 28. So 28 and upon 2 into a, 2 into a means a is 2. So then answer x is equal to minus 2 plus minus रूट 28 अपॉन 4. अब आपको यहाँ पे देख लो डायरेक्ट पता लग रहा होगा कि जो वैल्यू मिलेगी हम लोगों के पास, वो वैल्यू कैसे मिलेगी? अंडर रूट है तो डेसिमल नंबर आएगा. तो 2 प्लस मींस 28 मींस 5 पॉइंट समथिंग. ओके, तो 2 5 दोनों टाइम पर पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो इक्वल तो मिलेगा नहीं सर, ये कंफर्म है. तो इट मींस रूट्स आर अनइक्वल है. और डेसिमल के नंबर भी मिल सकते हैं. एंड यू नो दैट एवरी नंबर आर कमिंग इन द नंबर लाइन आर द एग्जांपल ऑफ real number. तो so we can tell us the roots are real and but unequal. तो this is the condition of the discriminant. Okay, ये सारी condition discriminant में follow होती है. Now I am taking one question from your book and the question is it is a simple question. X square minus 4x plus 3 is equal to 0. Use the discriminant to determine the nature of the roots of each of the following quadratic equation. Use the discriminant. Okay, with the help of the discriminant, find the, ये determine the nature of the root. हमने इसके root बताने की कैसे, sorry, nature कैसे होगा root का. तो क्या हो जाएगा discriminant? First compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. So then a is equal to 1, b is equal to b minus 4 and c is equal to 3. So then discriminant d is equal to b square minus 4ac. So d is equal to b square means minus 4 का square minus 4 into a, 1 into c, 3. So d is equal to 16 minus 4 3 ja 12. So then d is equal to 4. d is equal to 16 minus 12 4. Now this is positive 4. So means d is greater than 0 या less than 0. So the value of the d is greater than 0. And as you know that according to the condition of the discriminant, if d is greater than 0, so that time roots are
real and unequal. Yeah, distinct, we can say that distinct rule or different rule. D is greater than 0. Okay, next one is next question. Without finding the root, comment on the nature of the root of the following quadratic equation. So 3x square minus 6x plus 5 is equal to 0. So without solving the equation, comment on the nature of the root. इस पे रूट बताने की इनका नेचर क्या होगा. तो फर्स्ट कंपैरिजन, तो a is equal to 3, b is equal to -6, b is equal to -6, c is equal to 5. तो you know that discriminant b square minus 4ac. तो d is equal to b is -6 whole square minus 4 into a is 3 and c is 5. तो d is equal to 36 minus 4 3 जा 12 and 12 5 जा 60. 4 3 जा 12 and 12 5 जा 60. तो then d is equal to 24, 6 and 6 0 and 6 minus 3 24. Okay, and the sign will be negative. Now d, what is the d? D is less than 0 and d is less than, so what is the nature of the root? Roots are imaginary. इमेजिनरी का कहने का मतलब ये है सर कि अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो x की वैल्यू बनेगी लास्ट में, वो किस में बन रही होगी? अंडर रूट माइनस में आ रहा होगा. चेक करके देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा. ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, कहीं प्रॉब्लम ना हो इसलिए देख लो इस क्वेश्चन को. बहुत इजी क्वेश्चन है. 3x square minus 6x plus 5 is equal to 0. So now first multiply the 5 a into c. तो 5 3 जा 15. Break the 15 in the such way product will be 15 and difference या sum of the factor is -6. So what are the factor? So 3 5 जा 15 and 5 1 जा 5. So then factor are impossible. 5 3 जा 5 और 3 8, 5 minus 3 2. Okay, 5 3 जा 15 नहीं हो रहे कुछ. तो क्या करेंगे अब? वो मेथड x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac and whole upon 2a. तो x is equal to minus b. तो minus b is a is equal to 3, b is equal to -6 and c is equal to 5. So minus b is minus is already here and this minus to -6 plus minus b square minus 4ac. This one I already solved here. This is -24. So -24 and whole upon 2a. So 2a 2 into a is 3. So x is equal to 6 plus minus then root -24 upon 6. Now what is coming here? Sign of negative is coming in the under root, inside the root. जो नेगेटिव साइन है वो रूट के अंदर आ रहा है और रूट के अंदर आने का मतलब क्या हुआ? x is equal to 6 plus minus. I already explained lot of time. We can write this -24 is -1 multiplied by 24. Okay, and according to the complex number iota square is equal to, means we can let here 1 is equal to -1 is equal to iota square. एक इमेजिनरी नंबर को लेट किया जाता है यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन होगी. तो -1 is equal to I square means iota square. So then it become iota square into 24. Now under root when we solve it to 24 then it is iota. फिलहाल रख दो इसको, इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, डेसिमल में भी आंसर निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं फिलहाल इसमें रख रहा हूँ. तो ये कितना होगा? iota root 24 upon 6. Once time positive, second time negative. अब आंसर आपका आयोटा की फॉर्म में आ रहा है. तो दिस नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर. ओके, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0, तो दैट टाइम आवर आंसर या रूट ऑफ द नेचर इट विल बी इमेजिनरी रूट. ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर 4x स्क्वायर. अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग. क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट. 9a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर minus 48 abcdx plus 64 c square d square is equal to 0. And the question is again कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. इसके रूट जो होंगे उस पे आप लोगों ने कमेंट करना है, मतलब आंसर बताना है कि किस टाइप का नेचर होगा. ओके, तो देन इट इज
x square, then x, and then c. So then comparison this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. So then what is the value of a? Coefficient of x square. So what is the coefficient of x square? It is 9a square b square. Next b is equal to coefficient of x. So what is the coefficient of x? This remaining part, minus 48 a b c d, and c is equal to the whole part because c is the last number. Okay, it's constant, 64 c square and d square. So then you know that discriminant is equal to b square minus 4ac. So discriminant d is equal to b. What is the b? This whole part is the b. So minus 48 a b c d and whole square minus 4 into a is a, 9a is b square, 9a square b square. 4 into a 9a square b square into c is 64 c square and d square. Okay, so d is equal to minus plus 48 का स्क्वायर करेंगे तो और दूसरा बचेगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड d स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर. तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 6 8 4 जा 32 8 4 जा 32 64 64 और 6 70 0 7 4 4 जा 16 और 7 23. Okay, so 2306, then minus 49, it is 40 maybe 48 हाँ. B is 4abc, a is 9 हाँ, 4 into 9a square into 64. ये कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36 into 64. ये हो जाएगा आपका 2304. Okay, and the remaining is a square, b square, c square and d square. So d is equal to a square, b square, c square, a square, b square, c square, d square. Subtract करना है. For example, this is x, this is also x because same number. और 2306 minus 2304 कितना बचेगा? 6 में से 4 गया 2, तो आंसर is 2. It means d is greater than 0. D is greater than 0, and you know that d is greater than 0, so that time roots are real and distinct. Yeah, we can say that unequal. Okay, so this is the condition. Yeah, this is the way to find the nature of the root of any equation. कहीं मिस्टेक हो गई है. अच्छा 8 just 64, ये 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 4 then finally d is equal to 0, so then d is equal to 0. So what is the rule of d behind the d is equal to 0? In this case, when d is equal to 0, the roots are real and equal. Okay, the roots are real and equal. Next one is next question. Sixth part, if 4x square is equal to 1, so now first of all write in the comment section, this is quadratic equation or not? Is it quadratic or not? क्या ये quadratic equation है या नहीं है? Write in the comment section. क्या ये quadratic equation है या नहीं है? Okay, समर्थ कुकरेती, good. हाँ, आदित्य भट्ट, okay. 4x square is equal to 1. Tell me, is it quadratic equation or not? क्या quadratic equation है या नहीं है? Write your answer in the comment section. Okay, yes, this is a quadratic equation. Okay, when we compare this one, we can write 4x square minus taking 1 in left hand side is equal to
0. 4x square minus 1 is equal to 0. Okay, and this one we can write, for example, 4x square plus 0x minus 1 is equal to 0. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x square minus, तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना. ओके, b is equal to 0. स्टार्टिंग में मैंने बताया था a does not equal to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बट कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देन व्हाट आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो रूट इसको कंपैरिजन करो, कंपैरिजन विद ax square plus bx plus c is equal to 0. तो a is equal to coefficient of x square, it is 4, and b is equal to nothing is given, to 0, and c is equal to minus 1. Then now discriminant d is equal to b square minus 4ac. तो d is equal to b, b is 0 का square 0 minus 4 into a is 4 and c is minus 1. Okay, तो 4 into minus 1, तो d is equal to 0 and 0 का 0 minus minus plus 4 4 just 16. तो d is equal to 16, तो d is greater than 16. Sorry, d is greater than 0, and d is greater than 0 means roots are real and unequal, या we can say that distinct या different root. ठीक है, इक्वल है तो रूट क्या होंगे रियल. d is equal to 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. if d is greater than 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. एंड थर्ड वन इज if d is less than 0 तो that time roots are imaginary. okay, imaginary root. next question number third, and the first question is 4x square plus kx plus 9 is equal to 0, and the question is find the value of k so that the equation has equal root. We have to calculate here the value of q, and equal roots are real and equal. given here roots are, equation has equal root, roots are equal. okay, and as you know that when roots are equal, okay, since we know that roots are equal, when roots are equal, so that time discriminant is equal to 0. you know that. okay, discriminant 0 means b square minus 4ac. b square minus 4ac is equal to क्या होगा 0 होने वाला है. तो फर्स्ट कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ax square plus bx plus c is equal to 0. then a is equal to 4, b is equal to the coefficient of the x, it is k, and c is equal to 9. now substitute all the value in this part. so then therefore b square means k square minus 4 into a is 4 and c is 9 and is equal to 0. so k square minus 4 4 is 16 and 16 9 is 144. so then minus 144 is equal to 0. okay, then k square is equal to 144 positive. then k, what are the two possible value of the k? k is also in the form of square. square के फॉर्म में तो दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव. then how it is possible one is positive one is negative? we can check from here. k square minus 144 ये given is equal to 0, तो can we write this k square minus 12 का whole square is equal to 0. okay, and this here we can apply the formula of a square minus b square. so a square minus b square means k plus 12, and second time k minus 12 is equal to 0. so then k is equal to minus 12 and second k is equal to plus 12. so we are writing here one value is positive and second value is negative. so then k is equal to plus 12 and minus 12. okay, समझ चुके रहती, वेरी गुड. अच्छा, बफरिंग हो रहा है, कोई नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, कंटिन्यू वॉच करो, कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन. 2 मिनट. फोर्थ वन x square plus 7, then 3 plus k, 3 plus 2k minus 2x and 1 plus 3k is equal to 0. x square plus 7 bracket 3 plus 2k minus 2x and 1 plus 3k. So first of all arrange this equation in the form of a quadratic. It may be already in the form of the quadratic. quadratic के फॉर्म में ऑलरेडी है, देखो x square, then ये x यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किस कर सकते हैं डायरेक्ट. बस थोड़ा सा अरेंजमेंट. x square first write this part in the middle term. okay, तो minus 2 and 1 plus 3k. x I am writing at the last part. okay, x यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया, and plus 7 and 3 plus
2k is equal to 0. So this is the standard form of the quadratic equation. देखो, on comparing ax square plus bx plus c is equal to 0. So a is equal to the coefficient of x square, it is 1. Now b is equal to the coefficient of x, and what is the coefficient of x? Is equal to minus 2, 1 plus 3k, and c is equal to the last part, so 7, 3 plus 2k. So as you know that we have to find the value of k, and given that equal roots are, since given है, ठीक है, roots are equal, it means it is given. Okay, so when the roots are equal, so that time discriminant d is equal to 0 means b square minus 4ac is equal to 0. Substitute the value one by one here. So minus 2, 1 plus 3k and bracket close whole square, b square minus 4 into a is 1 and into c is 7 and 3 plus 2k. So now on solving this equation, then minus 2 and then whole square, the minus 2 whole square means plus 4, then apply the formula of a plus b whole square. A plus b whole square means 1 plus a square plus b square, 3 3 is 9k square, a square plus b square plus 2ab. So 2ab means 2 into 1 into 3k. Okay, 3 2 is 6k, so 6k. Then minus 4 into ये कितना हो गया आपके पास, 4 7 4 जा 28. Okay, this is 28. Then 3 plus 2k is equal to 0. Now solving one by one, then 4 1 जा 4 plus 4 9 जा 36 k square plus 4 6 जा 24k minus 28 into 3 and plus 28 into 2k. करेंगे जब सॉल्व, 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 and 7 8, then minus at 56k is equal to 0. On solving this equation, so 36k square, it is a single 36k square. Next 24k and minus 56k, 24k and minus 56k, so minus 2 and 32. Okay, so 32k, and then last one is minus 84 and plus 4, so minus 80 is equal to 0. So we can take common out here any number, and after that it is again in the form of the quadratic equation. यहाँ common ले लो, quadratic equation के form में आ गया. Then again we can solve by the help of a quadratic equation. Then again we have obtained the two value of the k. यहाँ पे k की दो वैल्यू मिलने वाली है, और वो दोनों वैल्यू क्या होंगी आपके लिए, k के लिए आंसर होगा. ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पार्ट. दिस इज योर होमवर्क. ट्राई टू सॉल्व दिस वन एट योर होम and send the answer in the WhatsApp group या classroom app. Okay, and tomorrow again we will meet. So thanks for watching this video. कर तो नहीं रहा हूँ कुछ, मैं कुछ नहीं. हाँ, तो मोबाइल में